Hello everyone. So welcome to our physics class. After a long time, I am recording this video. So sorry for that. So in today's class, we will discuss class 11 uniform circular motion chapter. So in this lecture, we will discuss the theoretical part. Only we will cover the theoretical part available in syllabus. In lecture number 2, I will discuss the numerical. Okay, let's start the topic. So topic name is uniform circular motion. Okay. So first, you try to understand what is the basic difference between linear motion and circular motion. Okay. So in case of linear motion, you will see in case of linear motion, linear means the path is straight. And in case of linear motion, observe one thing, these pink colored dots are the position of the particles. So direction of motion remains fixed. So in linear motion, we can say keeping the direction fixed, position of particle changes continuously. Position of particle changes continuously. Yes. So this is your linear motion. In case of circular motion, what you will observe? Let this is the center, or this is a fixed point, and this white color dot represents the particle position. So O से लेकर white color dot तक इसको हम लोग बोलेंगे position of particle. This line represents position of particles with respect to origin or center. This is your position of particle. Okay. So keeping position of particle fixed or magnitude of position of particle fixed on changing the direction continuously. If you will change the direction of motion continuously, what you will get? You will get the path of the particle will be circular. Yes. So here we can discuss keeping position of particle fixed, keeping the position of particle fixed on changing the direction of motion continuously, on changing the direction of motion continuously, we will get circular motion. We get circular motion. So this is the basic difference between your linear motion and circular motion. Next concept is our uniform circular motion. So here what you will observe, circular motion means the path is circular, but in case of UCM, that means uniform circular motion, your particle moves in a circle with constant speed. Uniform represents the speed of the particle remains constant. But in case of circular motion, direction of motion changes continuously. So how many times direction of motion changes in a circular path? Infinite times. Yes. So in case of uniform circular motion, we can write if a particle moves in a circle with a constant speed, then motion is called UCM. Then your motion is said to be UCM. Motion is, shortly I am writing uniform circular motion. Always remember UCM also called an accelerated motion. So it is also called an accelerated motion. Why? Okay. As the direction of motion changes continuously, we can treat it as accelerated motion. So the reason is as direction changes continuously, so
velocity changes continuously. Velocity also changes continuously. Yes. So as the velocity changes, so because of this change in velocity, an oscillation will develop. So this is called accelerated motion. Yes. So next topic is our angular displacement. So one by one we will discuss the terms related to uniform circular motion. So first term is angular displacement. Yes. Suppose see, this is the circular path and this is your y-axis and this one is x-axis. Yes. One is your y-axis, another one is x-axis. Okay. The intersecting line is your the intersecting point. Intersecting point को हम लोग क्या बोलेंगे? Intersecting point is our center of the circular track. Okay. So now see, suppose particle is at point A when time t is equal to t1. So particle is at point A when time t1. Yes. So when it is at A with respect to center O, what is the angle made by its position vector? Let it be theta 1. Let it is your theta 1. Yes. And when it is at point B, when time t is t2 second, the position vector makes an angle theta 2 in which sense? In anticlockwise sense. Let the angle is theta 2. This angle is theta 2. Yes. And this is your radius r. Remember this thing. This is the radius r and this is radius r. So from A to B, this line represents your delta S and the angle difference is delta theta. Yes. So always remember, in diagram you are observing that AB is your what? Arc. AB is an arc. So when A is very close to B, then it seems to be a very small straight path. Yes, let it is delta S. So remember one thing here, delta theta is your angular displacement. So angular displacement is nothing, it is an angle. Yes. So we know angle formula is angle is equal to arc length by radius. Angle is equal to arc length by radius. So as per this concept, we can write delta theta is equal to delta S by R. Yes. And also remember delta theta, it is an axial vector. It is an axial vector. Yes, angle has no dimension, so angular displacement is dimensionless. So डेल्टा थीटा के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो तीन चार पॉइंट हम लोग लिख पाएंगे. सो डेल्टा थीटा, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट थिंग, इट इज abbreviated as angular displacement in case of circular motion. Ready? Next is, it is an axial vector. It is an axial vector. It is one of the important thing. Then it is dimensionless. It is dimensionless. So axial vector, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? By the help of right hand thumb rule. As per the direction of right hand thumb rule. यस, जिस डायरेक्शन पे बॉडी घूम रहा है ना, उसी डायरेक्शन में तुम लोग राइट हैंड का 4 फिंगर एक्सेप्ट थंब उसको कॉल करोगे. एट दैट मोमेंट द डायरेक्शन इन हुईज थंब इज डायरेक्टेड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा. एंड उसका यूनिट क्या होगा डेल्टा थीटा का? द यूनिट इज रेडियन. इट्स यूनिट इज रेडियन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड. नेक्स्ट कम टू सेकेंड टर्म, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट टर्म इज आवर एंगुलर वेलोसिटी. सी, angular velocity. So it is the rate of change of angular displacement, just like linear. पे हम लोग जिस तरीके से डेफिनेशन लिख रहे थे, उसका मीनिंग लिख रहे थे, उसी हिसाब से हम लोग को एंगुलर टर्म भी डिस्क्राइब करना है. सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आई होप इट इज़ क्लियर. यस. सो दो फार्मूला हम लोग लिखेंगे.
omega average. It is denoted by the letter omega, angular velocity. So omega average का वैल्यू क्या होगा? It is denoted by just like this omega bar. That is delta theta divided by delta t. Yes, लेकिन when this delta theta is very very small, that means for a very small time interval, in a very small time interval, body can cover a very small angle, or body can cover small angular displacement. At that moment we can calculate instantaneous angular velocity, omega instantaneous. Whose formula will be limit delta t tends to 0, delta theta divided by delta t, that is equals to d theta by dt. So one is your average angular velocity and second one is your instantaneous angular velocity. Yes, and उसका यूनिट क्या होगा? देखो इसका यूनिट डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. थीटा का यूनिट क्या है? एंगल का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड. यस, एंड उसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ओमेगा. एंगल का तो डायमेंशन नहीं है, सेकेंड का डायमेंशन, एंगल का डायमेंशन m0 l0 t0, and for second, for time we can write this is t1. So answer will be m0 l0 t minus 1. Yes, this is about your angular velocity. Next come to another term, that is time period. Third term, that is time period. Yes, so in case of uniform circular motion the speed is constant na? So in a constant speed, if a particle is trying to move in a circular path, then for first round the time taken is equal to the time taken by that particle to complete the second round. That will be equal to the time taken by the particle to complete the third round also. So time period t, capital T, it means it is the time taken by the particle. It is the time taken by particle to complete one revolution. To complete one revolution. Yes. Next, number 4 term, that is frequency. Number 4 term is frequency. अच्छा, कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? ईटा और एफ और न्यू. दिस इज न्यू. So it is the reciprocal of, we all know, frequency f is equals to 1 by time period. Simply. इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स, और इसको हम लोग लिखेंगे हर्ज, HERTZ, in symbol capital H small z. Yes. So next 5 number term, number 5, that term is term name discussion करेंगे हम लोग, that is the relation between, in number 5 we will discuss relation between omega, nu and time period. Okay, so omega का वैल्यू क्या है? d theta by dt. Angular velocity is equal to angular displacement by time. For one revolution, what we can write? For one revolution, we can say the d theta value will be 2 pi radian. So omega का वैल्यू क्या हो जाएगा? The angle will be, after one revolution, the angular displacement is 2 pi radian. 2 pi radian. Yes, and for one revolution, the time required by the particle is called t second. That is equals to 2 pi by capital T. So omega is equals to 2 pi by capital T. Yes, 1 by time period is frequency, that is 2 pi f. बस ये रिलेशन हम लोग लिख पाएंगे, और उसका यूनिट जो भी है बराबर रहेगा इसमें, रेडियन पर सेकेंड. ओके, सो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ओमेगा न्यू, ओमेगा विथ टी एंड ओमेगा विथ फ्रीक्वेंसी. न्यू लिखो या चाहे तुम फ्रीक्वेंसी एफ लिखो, जो भी लिखो चलेगा. नेक्स्ट, इन पॉइंट नंबर 6 we will discuss relation between linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. Okay, so linear velocity, that means v, and angular velocity, that is linear velocity, that is v, angular velocity omega. Yes, so let us consider a particle is moving in this circular track and this is the center. Here particle is at A position. The
radius is r. When particle moves from A to B, the radius is r also. The angle subtend, that is your delta theta, and in time taken to move from A to B, delta t, the linear displacement is delta s, suppose. Yes. So as per language we can write, let in time interval delta t, particle moves from A to B. Particle moves from A to B. So angle covered during delta t time. So in this situation, angle covered during delta t time, let it be delta theta. And remember, radius remains fixed. Radius is equal to small r. Okay, we know. So now see how we are going to derive the relation. So we know delta theta, angular displacement, angle is equal to arc by radius, arc length by radius. So delta theta is equal to arc length is delta s divided by r. Okay. So in this case, what will be the value of delta theta by delta t? That is equals to 1 by r into delta s by delta t. So on taking limit delta t tends to 0 on both sides, we can write it as the limit delta t tends to 0, delta theta by delta t is equal to 1 by r into limit delta t tends to 0, del s by del t. And the whole expression in a very short form we can write it as d theta by dt. So 1 by r, for this whole we can write it as ds by dt. ds by dt. Yes. So what is delta theta, d theta by dt? That is your omega. Omega is equal to 1 by r into ds by dt, that is your v. So we can say v is equal to omega r. And remember, v is equal to omega r. This is in terms of magnitude only. Yes, it does not hold good for vector form. तो वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा? इन वेक्टर फॉर्म दिस इज इन मैग्नीट्यूड. We can write this is in magnitude. Okay. So in vector form, v vector equal to, remember, omega vector cross r vector. So don't think that v vector can be written as r cross omega, because cross product is not commutative. So this will be v vector equal to omega vector cross r vector. So this is in vector form. Okay. So let's see one more thing in case of this vector form. So let the circular path is like this, and this is the angular velocity omega vector. Yes. And linear velocity body ऐसे मूव कर रहा है, देखो ये कौन सा डायरेक्शन? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मैनर पे. यस. सो एट एनी इंस्टेंट, at any point, so which one is the r vector? देखो, this one will be the r vector. बस, this one is r vector. तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री. At this point, which one is the linear velocity? Let this one is the linear velocity, v vector. अभी v vector r vector के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? 90 डिग्री. Yes, because tangent and radius both are perpendicular. Yes. So as per this figure, we can say v vector is perpendicular to r vector, omega vector is also perpendicular to r vector, also v vector is perpendicular to omega vector. So when two vectors are perpendicular to each other, we can say dot product of v vector dot r vector कितना होगा? 0. Also omega vector dot r vector, इसका आंसर क्या होगा? 0. v vector dot omega vector, that will be equal to 0 also. Yes. So this is all about your relation between linear velocity and angular velocity. Yes, I hope it is clear to all of you. So in point number 6, we have completed relation between linear velocity and angular velocity. Next come to your angular acceleration part. That is, let's come to point number 7. Point number 7, give heading angular acceleration. Yes, it is one of the interesting thing also.
that is written as alpha vector. Linear acceleration, that was your a vector. Angular acceleration, that is alpha vector. Yes. So what we can write? Remember, it is the rate of change of angular velocity. It is the rate of change of angular velocity. Yes. So average angular acceleration का वैल्यू क्या होगा? अल्फा एवरेज, और यू कैन से अल्फा बार, दैट इज डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी. अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या होगा? इंस्टेंटेनियस मीन्स टाइम इंटरवल क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू जीरो. सो वी कैन से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, दैट इज योर डी ओमेगा बाई डी टी. दिस इज योर अल्फा इंस्टेंटेनियस. यूनिट क्या होगा बोलो? यूनिट न्यूमरेटर पे क्या है हमारा? ओमेगा. ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर पे हमारा टाइम इंटरवल, दैट इज ऑल्सो सेकेंड. सो आंसर होगा हमारा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन. वन मोर थिंग, दैट इज द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ अल्फा. सो आंसर विल बी m0 L0 t to the power minus 2. Bas. So this is about your angular acceleration. So in right side part, now we can write the relation between, in point number 8, let's discuss about the relation between linear acceleration and angular acceleration. In point number 8, we will discuss relation between linear acceleration and angular acceleration. Angular acceleration. Linear acceleration is A, angular acceleration is alpha. In a very short form, we can derive relation. We know from the point number 8, V is equals to omega into R in magnitude. So taking differentiation on both sides with respect to time, dV by dt will be d by dt of omega R. Yes. So R is constant, we can write it as dr into d omega by dt. R into d omega by dt. So now dV by dt, it can be written as A is equal to R into d omega by dt, that is your alpha. Yes. So A is equal to R alpha. When particle moves in a circle, its radius R is fixed. So take it outside, R is constant. Yes. So it is true for magnitude only. Remember this formula, it is true for magnitude only. Yes. So in vector form, what we can say? In vector form we can write A vector will be equal to alpha vector cross R vector. R cross alpha होने से गलत होगा, डायरेक्शन मैच नहीं करेगा. Okay, vector product is not commutative. This is about the relation between linear acceleration and angular acceleration. In point number 9, we will discuss the most awaited and important question, that is the centripetal acceleration and its derivation for its magnitude and direction. Okay, so let's start the topic. So our point number 9, in point number 9, we will discuss centripetal acceleration. First you listen, all of you listen the concept behind this centripetal acceleration. Yes. So in a, or you write, when a particle moves around a circular path, we can say in UCM actually. This is in uniform circular motion. Yes. So in uniform circular motion, when a particle moves around a circular path, क्या दिखाई देगा हमको इसमें? Its speed is constant actually. Very good. But change क्या हो रहा है? But direction changes continuously. Okay. डायरेक्शन चेंज होने के लिए
as डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली सो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, विच इम्प्लाइज वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूसली। ओके, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी एक एक्सीलरेशन डेवलप होगा, दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सो उसका रूट कज क्या है बोलो, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन किसके लिए फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। यस, चेंज इन डायरेक्शन होने से चेंज इन वेलोसिटी होगा एंड चेंज इन वेलोसिटी गिव्स राइज टू सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। यस, so due to this change in velocity, particle experiences an acceleration called centripetal acceleration. It is called centripetal acceleration, or you can say it as center seeking acceleration. Center seeking, that means its direction is always towards the center of the circular track. Center seeking acceleration. Yes, so finally you can say its direction is always towards the center, is always towards center of the circular track, or simply write towards the center. Now how to derive the expression for centripetal acceleration? Now see, focus upon a diagram actually. From the beginning, in case of your CBSE exam, you have to write the concept from the beginning actually. Point number 9 से शुरू करोगे. Okay, so let's consider the particle is revolving in a circular track like this, and the center of this track is O. O is the center of this track. So let us think, at any instant particle is at point P. पार्टिकल अभी P पॉइंट पे है, ये है तुम्हारा रेडियस। अच्छा, P पॉइंट पे है, उसका वेलोसिटी कैसा होगा, टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। बस ये है तुम्हारा V1 वेक्टर। यूसीएम मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, V1 वेक्टर, ये पॉइंट का नाम है M। अच्छा, पार्टिकल P से लेकर Q तक सपोज आ रहा है इन टाइम डेल्टा टी। यस, Q तक आ गया अभी, सो एट Q दिस इज द रेडियस। लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा, टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। हियर दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। टेंजेंट ड्रा करने के बाद हमको पता चलेगा दिस विल बी वेलोसिटी। यस, बस हो गया, टेंजेंट ड्रा हो गया। बस, this is suppose your M point and this is your N point. It is your V2 vector. Yes, and Mn वेक्टर अभी क्या शो करेगा बोलो, Mn वेक्टर। सो डायग्राम पे हम लोग दिखाई दे रहा है, रिमेंबर वन थिंग हियर, V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी है ना, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम टू सेम, आज द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, याद रखो, आज मोशन इज यूनिफॉर्म, ऐसे रिप्रेजेंट करना है हम तुमको बस। सो इन टाइम टी, इन फिगर वी कैन राइट, इन फिगर इन टाइम टी particle moves from P to Q. In time t, particle moves from P to Q. कैसे? By making an angle theta with respect to center. By making an angle theta with respect to center. And during this time, the displacement is delta S suppose. And with displacement delta S, वेरी गुड। व्हाट इज V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, ये पता चल गया तुमको। V1 वेक्टर इज द वेलोसिटी एट P, वो कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉट एवरेज वेलोसिटी एट P, एंड V2 वेक्टर दैट इज द वेलोसिटी एट Q, ओके। सो ये फिगर को देखने से क्या पता चल रहा है, देखो
ये क्यू से हम लोग इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से यहाँ पे मीट कर रहा है ना, बस। तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमको, ये ट्रायंगल एक दिखाई दे रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल पे देखो V1 वेक्टर Mn वेक्टर, ये क्या है, दोनों सेम ऑर्डर पे है। सो एज पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन V1 वेक्टर फ्रॉम प्लस Mn वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू V2 वेक्टर, ये हमको लिखना चाहिए एक्चुअली। सो इन फिगर वी कैन राइट, इन नेक्स्ट स्लाइड देखो बस। सो इन फिगर V1 वेक्टर प्लस Mn वेक्टर दैट इज इक्वल टू V2 वेक्टर। सो विच इम्प्लाइज Mn वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, Mn वेक्टर विल बी इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, and this can be written as delta V vector, which is termed as change in velocity. Yes, change in velocity. I hope up to this it is clear to all of you. So let us consider one case when P and Q are very close to each other. What will the diagram? When P and Q are very close to each other, are very close to each other. ऐसा होने से क्या होगा, when P and Q are very close to each other, देखो ये डायग्राम हमारा ऐसा था, दिस वाज द डायग्राम। देखो P एंड Q क्लोज लेने से फ़ायदा क्या होगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हम लोग देख पाएंगे वेरी इजीली, वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग। दिस इज सेंटर, हो सपोज P से लेकर Q तक ऐसे वो मूव कर रहा है, P से लेकर Q, वेरी गुड। एट P दिस विल बी द टेंजेंट, यस, एंड एट Q दिस विल बी द टेंजेंट, यस, at Q this will be the tangent, perfect, दिखाई दे रहा है tangent तुमको, very good। this point we have marked it as V1 vector, this is your V2 vector, this point is M, this point is N, and Mn vector is delta V vector, Mn vector का वैल्यू delta V vector, and the angle, ये एंगल कितना, डेल्टा थीटा। सो दोनों का टेंजेंट वो भी एंगल कितना रिप्रेजेंट करेंगे, बाय ज्योमेट्री दिस विल बी डेल्टा थीटा, yes, okay। So as per the figure, if you will see from the figure, if you will observe it properly, अच्छे से देखो, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमको, रुको वन, बस ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OPQ ट्रायंगल, OPQ। अनदर ट्रायंगल देखो PMN, अनदर ट्रायंगल इज PMN, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दे आर सिमिलर, यस, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो फ्रॉम द फिगर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल PMN आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर, यस। सो फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन राइट PO बाई PM और OP बाई PM, ऐसे लिखो, OP बाई PM is equals to PM by Mn, sorry OP by PM, ये लाइन OP डिवाइडेड बाई PM, OP डिवाइडेड बाई PM इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई Mn, ऐसे हम लोग रेशियो ले पाएंगे। सो OP बाई PM इज इक्वल्स टू PQ बाई Mn, यस। तो फ्रॉम सिमिलरिटी कंडीशन OP का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग, रेशियो ले रहे हैं, R डिवाइड बाई PM का वैल्यू V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड V, PQ का वैल्यू डेल्टा S, एंड Mn दैट इज योर डेल्टा V, ये है तुम्हारा डेल्टा S, PQ क्या था हमारा, डेल्टा S, यस, वी हैव डिस्कस्ड इट। अच्छा, फ्रॉम दिस वी कैन राइट डेल्टा V का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा S बाई R इंटू V, डेल्टा S बाई R इंटू V, which implies we can write delta V by delta T is equals to V by R into delta S by delta T, yes। So taking limit on both sides, अरे हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं with respect to time, so limit delta T tends to 0, delta V by delta T is equals to V by R, limit delta T tends to 0, डेल एस बाई डेल टी, बस ये करने से बस हम लोग क्या लिखेंगे, देखो आफ्टर डूइंग दिस वी कैन से दिस होल टर्म विल गिव अस व्हाट, डी वी बाई डी टी, एंड ये हो जाएगा हमारा डी एस बाई डी टी, ओके।
I hope it is clear. So this will be dv by dt is equals to v by r into ds by dt. Very good. And this is your a. So v by r into ds by dt, it is your v, that is your v square by r, v square by r. So this is the magnitude of centripetal acceleration, v square by r, and it is formed. ओके उसका बेसिक रीजन क्या है, ये किसके लिए फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो वेलोसिटी चेंज होगा ना, वो वेलोसिटी चेंज के लिए जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. एसी का वैल्यू हो गया. इन फ्रॉम मैग्नीट्यूड वी नो, यहाँ पे लिखोगे आज v का वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू आर. सो ए सी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ना. सो वी स्क्वायर के लिए हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर. दैट मीन्स आर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर आर. यस, दिस वी कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग. यस, उसका डायरेक्शन देखेंगे हम लोग. यस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए. डायरेक्शन वन थिंग देखो, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दैट मीन्स वी कैन से डेल्टा थीटा भी क्या होगा, टेंस टू जीरो. टेंस टू जीरो मीन्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पे कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, लीनियर डिस्टेंस, वेरी स्मॉल लीनियर डिस्टेंस. ओके, एंड लीनियर डिस्टेंस जितना कम होगा उस हिसाब से हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेरी स्मॉल होगा. सो डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंस टू जीरो. सो ऐसे होने से क्या होगा, तो जितना डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो हो जाएगा, देन डायग्राम को अच्छे से देखो, देन ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ओ पी एम एंगल ओ पी एम, ये वाला एंगल देखो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो होने से एंगल ओ पी एम, इसका वैल्यू किसके साथ बराबर होगा, पी एम एन. ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. यस, ओके. तो ये दोनों 90 डिग्री होने से क्या मिलेगा हमको, ओके, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे तो पी ओ एंड एम एन बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर. एंड पैरेलल होने से देखो एक चीज़, वी नो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, रेड कलर में मार्क किया हूँ देखो, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन. एक वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर पाएंगे बस. अरे डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या है, दिस रेड कलर एरो मार्क. यस, एंड अलोंग दिस रेड कलर एरो मार्क वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. आज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर इज पॉसिबल. ये वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे हम लोग अटैच कर पाएंगे. एंड ये क्या शो कर रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन. एंड ये किसके तरफ है रे, टुवर्ड्स द सेंटर. आई होप you are getting my point. We know the direction of acceleration is along direction of change in velocity. So this is the direction of centripetal acceleration, क्योंकि इस डायरेक्शन पे चेंज इन वेलोसिटी अवेलेबल है. एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर पाएंगे हम लोग. सो आज एम एन वेक्टर इज पैरेलल टू पी ओ वेक्टर. सो पी ओ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. दैट मीन्स दिस विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन. आज acceleration is along the direction of change in velocity. I hope this point is very clear to you all. So now we can write it as, कैसे लिखेंगे देखो, in a very systematic way. What you can write, देखो, when delta t tends to 0, at that moment delta theta tends to 0, then OPM angle is equals to PMN angle, that is equals to 90 degree. So for this we will get MN and OP both are parallel. ऐसा होने से क्या लिखेंगे हम लोग, which implies direction of centripetal acceleration is along delta v vector, which implies direction of centripetal acceleration is towards the center. क्योंकि डेल्टा वी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज पी टू ओ पॉइंट, टुवर्ड्स द सेंटर. पी टू ओ एट पॉइंट पी बस लिखेंगे हम लोग, बस इतना ही. सो दिस इज अबाउट योर बट कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन. यस, ओके. सो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग और रिमेनिंग थ्योरी को भी कंप्लीट कर देंगे. बट दिस लेक्चर इज मीन्ट फॉर ओनली
योर CBSE सिलेबस। यस, सो एक ही लेक्चर में तुम लोग सारा का सारा चीज़ कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट कम टू योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, दिस इज आवर लास्ट पार्ट एक्चुअली। This is our point number 10. Yes, so in point number 10 we will discuss non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. Okay, circular motion means path is circular, but in case of non-uniform, what you will get, the speed is not constant, that is variable. So here particle moves in a circular path, moves in a circular path, but not in constant speed, but not with constant speed. That means speed is variable. यहाँ पे अच्छा चीज़ हम लोग को मिलेगा, देखो। सो व्हेन कॉन्सेप्ट इज व्हेन पार्टिकल इज नॉट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन पार्टिकल इज नॉट मूविंग with constant speed, you will get two things, you will face two things. What is that? Speed of the particle भी चेंज हो रहा है and डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है। पाथ सर्कुलर, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड भी चेंज होगा। तो दोनों के लिए we will get two type of acceleration, we will get two types of acceleration. So remember, so in this situation what you can write, we have to write, since the speed is changing, then there is a tangential component. और ड्यू टू चेंज इन स्पीड जो एक्सीलरेशन मिलेगा ना हमको, स्पीड चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज होगा, the resulting acceleration is called tangential acceleration. In this way you can write, or since the speed is changing, then there is a tangential component of acceleration. इसको हम लोग लिखेंगे tangential acceleration, it is equal to dv/dt. Remember this thing. What is the v meaning? V means v vector mod. Yes, that can be written as d/dt of r omega, क्योंकि v इक्वल r ओमेगा ना, बस. So we can write as r is constant, this is d omega by dt, and d omega by dt is alpha, it is r alpha. This is about your types of acceleration which is produced by the change in speed only, due to change in speed. Another thing is direction भी change हो रहा है. So since the direction is changing, a radial acceleration or centripetal acceleration exists. So centripetal acceleration exists. Yes, whose value will be AC is equal to v square by r. So in diagram we can show it like this. हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये है सर्कुलर पाथ, सपोज बॉडी ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज योर सेंटर, यस सेंटर ओ. एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड वो जो मिलेगा हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज योर एटी, एंड सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन इज एसी, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन. बस दोनों का टेल पॉइंट, कॉमन टेल पॉइंट अवेलेबल है, ये दोनों को बेस करके हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. वेरी गुड. So then diagonal starting from that common tail point gives the direction of resultant vector. So this diagonal starting from that common tail point, that gives us net acceleration, a vector net. So as AT and AC are perpendicular to each other, thus we can write net acceleration will be a net, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट ओवर. बस AC स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर बाई आर, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस AT मीन्स वी हैव रिटन r अल्फा, उसका स्क्वायर, देन रूट ओवर. देन एज पर द गिवन डाटा वी कैन
put the value, and further we can proceed towards the solution. This is about your net acceleration. Yes, so in case of non-uniform circular motion, remember one thing, net acceleration we will get. But in case of uniform circular motion, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर्कुलर वर्ड इज देयर मीन्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, बस इसीलिए जो एक्सीलरेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन, रेडियली इनवर्ड, उसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, सेंटर सीकिंग और सेंट्रीपेटल और रेडियली इनवर्ड एक्सीलरेशन. ओके, सो एक कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पता चला हमको, नोट पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे. इन केस ऑफ नोट पॉइंट वी कैन राइट differentiation of speed gives tangential acceleration. Yes, and differentiation of velocity gives total acceleration. Remember one thing, in note point we can discuss differentiation of speed gives tangential acceleration. It gives tangential acceleration. And differentiation of velocity, velocity means speed as well as its direction. Differentiation of velocity gives total acceleration or net acceleration. It gives total acceleration or net acceleration. I hope it is clear. So now we can say dv vector by dt whole mod is not equal to d by dt of v vector mod only. So in left side what I have written, dv vector by dt magnitude, it means magnitude of rate of change of velocity, magnitude of rate of change of velocity, that is called magnitude of total acceleration. क्योंकि differentiation of velocity, that is total acceleration, it is magnitude of total acceleration. Very good. And another term d by dt of v vector mod, ये क्या शो कर रहा है, देखो ये शो कर रहा है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए जो एक्सीलरेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हिच एक्सीलरेशन, दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दैट इज आवर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. Yes, tangential acceleration. I hope it is clear to all of you. In last part, we will discuss some formulas based upon your translatory or linear motion and rotational motion. In left hand side, we can write translatory motion, translatory or linear motion, and in right hand side, we can write rotational motion. Yes, so in translatory motion, linear velocity को हम लोग कैसे लिखते हैं, linear velocity magnitude है जो we can write that is u, linear velocity is u. Here linear angular velocity we can write linear angular velocity, so it will be omega naught, this is equals to omega naught. Ready? Next one is final velocity, final linear velocity or final velocity, that is v. Here final angular velocity, that is equals to omega. Here displacement, in case of linear the displacement is written in case of s, displacement is s. Here angular displacement will be angular displacement, that is our theta. Very good. Next is acceleration. Which acceleration? Linear acceleration. Linear acceleration is a, but angular acceleration is alpha. Angular acceleration, that is our alpha. Next term is when a is constant, when a is equals to constant, when acceleration is constant, equation of motions are valid, that are v is equals to u plus at, then s is equals to ut plus half at square, then v square is equal to u square plus 2as, and essence formula u plus a by 2 into 2n minus 1. Like this, when alpha is constant,
when alpha is equal to constant, we can say when alpha is constant, omega is equals to omega naught plus alpha t. Then angular displacement, that is theta, is equals to omega naught t plus half alpha t square. Next, omega square. Omega square is equals to omega naught square plus 2 alpha theta, and theta nth is equals to omega naught plus alpha by 2 into 2n minus 1. Okay, so I hope this comparison is very simple for you all. We have to compare only. As per the linear motion equation, you can write the rotational motion equation. Yes, so this is overall the theoretical part of uniform circular motion. So wait up to your lecture number 2. In that lecture, we will discuss the numerical portion only related to UCM. After this, we will discuss dynamics of circular motion. Yes. Okay, so kindly like, share and subscribe this channel and share this video to your friends so that it will be helpful for them. Thank you. Have a nice day.